নমস্কাৰ। আজি আমি ক্লাছ 8ৰ স্বচ্ছদান পাঠৰ অসমীয়া অৰ্থ বাঙনি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো সকলোৱে চাবা কি আছে। স্বচ্ছদান হৈছে असल दान। प्रस्तुत कहानी में यह दिखाया गया है कि दिया हुआ कहानीत এইটো दिखा होइसे कि गरीबों को दान देना अच्छी बात है। दुखियाक दान दियाটো এটা ভাল কথা। लेकिन जब वो दान अतिमात्रा किंतु जेतिया हे दानटू अधिक मात्रात হয় और अनावश्यक रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात जिजने दान लबो তেওঁৰ प्रयोजनतকৈ अधिक दान हो जाए तो वो लोगों के लिए अकर्मण्यता का कारण बनता है। तो সেই দানটো তেওঁ যিটো গ্ৰহণ কৰিব সেইটোৱে তেওঁৰ কাৰণে অকৰ্মণ্যতা অৰ্থাৎ দান পাই পেলাই তেওঁ আৰু কাম নকৰিব। इसलिए दान देते समय সেই কাৰণে দান দিয়াৰ সময়ত लोगों को सोच समझकर दान देना चाहिए। সেইকাৰণে দান দিয়াৰ সময়ত মানুহক ভাবি চিন্তি सोच समझकर ভাবি চিন্তি দান দিব লাগে। राजा बुश এইটো কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিছো চাব। राजा बुश अपनी दानशीलता के लिए विख्यात थे। राजा बुश নিজৰ दान देवतार কাৰণে विख्यात আছিল। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা কোনেও খালী হাতত যোৱা নাছিল। वे उसे अन्न धन देकर विदा करते थे। তেওঁ যিজন আহিব ভিক্ষা খুজিবৰ কাৰণে তেওঁক নানান ধৰণৰ উপহাৰ অন্ন দিছিল। অন্ন ভাত নহ'লে দন দিছিল। विदा करते थे विदाय কৰিছিল এইবিলাক। उसे उनके राज्य में लोग आराम से जीवन बिताते थे। তেওঁৰ ৰাজ্যত মানুহে বৰ আৰামত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। एक दिन एक साधु को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया गया। এদিনাখন এটা ঘটনা হ'ল। এদিনা কি কৰা হ'ল, ৰজাৰ সন্মুখত এজন সাধু অৰ্থাৎ সন্ন্যাসী ব্যক্তিক অনা হ'ল। राजा बुश से सिपाही ने कहा, राजा बुशक তেওঁৰ सिपाहीয়ে ক'লে, महाराज यह आपकी निंदा कर रहा था। এইজন মানুহে আপোনাৰ বেয়া গাই আছিল। राजा बुश ने साधु को तत्काल मुक्त कर दिया और पूछा। राजा बुशे साधु अर्थात সন্ন্যাসীজনক সোনকালে মুক্ত কৰিলে আৰু সুধিলে, महान आत्मा जी आपको क्या कष्ट है? आदरेৰে সুধিছে যে আপোনাৰ কি কষ্ট আছে। मैं दान दान्य से आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। মই ধন সোণেৰে আপোনাক কিবা আৰাম দিব পাৰিম। सेवा कर सकता हूँ। তাৰপিছত কি কৈছে ইয়াত, साधु बोला আৰু সন্ন্যাসীজনে ক'লে, मैं भिखारी नहीं हूँ যে তুমি মোক ধন সোণ দিবা, মই ভিখাৰী নহয়। अपनी खेत में काम करता हूँ, নিজৰ খেতিত কাম কৰোঁ, तब अन्न ग्रहण करता हूँ, তেতিয়াহে ভাত খাওঁ। राजा बुश साधु की बात सुनकर चकित रह गई। राजा बुशे সেই সন্ন্যাসীজনৰ কথা শুনি বৰ আচৰিত মানিলে। उनके जीवन में यह पहला व्यक्ति था। তেওঁৰ জীৱনত এইজন ব্যক্তি প্ৰথম जो उनके दान को अस्वीकार कर रहा था, যিজনে তেওঁৰ দানক ৰজাৰ দানক অস্বীকাৰ কৰি আছে। राजा ने पूछा, ৰাজাই সুধিলে, फिर आपको मुझे क्या शिकायत है? তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ ওপৰত কি शिकायत আছে অৰ্থাৎ কি অভিযোগ আছে। साधु ने निडर होकर कहा, साधुए निर्भय ক'লে, राजा साधु का काम होता है। साधु अर्थात সন্ন্যাসীৰ কাম হৈছে
राजा को सचेत करना, राजा হচকিত কৰা। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैं আপোনাক এয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে कि যদি आप प्रतिदिन इसी प्रकार दान देते रहे, যদি আপুনি এনেকৈ दान দি থাকে, तो आपके राज्य के लोग তেতিয়া আপোনাৰ ৰাজ্যৰ মানুহ কমজোৰ हो जाएंगे। কমজোৰ মানে বল নাথাকিব তেওঁলোকৰ হাতত, তেওঁলোকৰ গাত। और देश का जल्दी ही पतन हो जाएगा, और দেশৰ অতি শীঘ্ৰে বিনাশ হ'ব। ধন্যবাদ। আজি এইখিনিলৈকে। তাৰ পিছৰখিনি তোমালোকক নেক্সট পাৰ্টত বুজাই দিম। এইখিনি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এটা লাইক কৰি দিবা। ঠিক আছে।